So before starting this video, I'd love to thank the sponsor of this video, which is Code Studio. Now, if you are willing to practice interview problems topic wise, this is the place where you should look for, because Code Studio has over 2000 plus problems and has all the problem solution in C++, Java as well as Python. If you're looking for a guided path, then you can find for Python, for DBMS, for object-oriented programming, operating system, computer networks, system design, web development, any other thing that you're looking for, you'll find guided paths for every other thing over here. Also, if you're looking for any top company questions, let's say if you have an interview at Amazon, if you're looking for Amazon questions, you can get all the top Amazon coding questions via tag and all the solutions in C++, Java as well as Python. Also, if you have an interview schedule, you can read their interview experiences, where there are 600 plus interview experiences from companies like Amazon, Microsoft, Adobe, Google, etc. So what are you waiting for? Code Studio has a lot of free resources for interview preparation. The link will be in the description. Make sure you check it out. Hey everyone, welcome back to the channel. I hope you guys are doing extremely well. Recursion, yes, one of the toughest topics for the beginners is what I'm going to start today. So it's going to be an entire playlist. You need to know any prerequisites. Yes, there is a slight prerequisite. You should be knowing what is a function. Yes, what is a function? Like how do you write a function to add two numbers? You should be knowing that much. If you know how to write a function to add two numbers, that is more than enough to watch this playlist. Will this playlist be in C++ or in Java? Doesn't matter. Just watch this, because I'm going to write pseudocode. Okay, so to start off with, what is a recursion? Let's read the first line. When a function calls itself, very important, when a function calls itself, that means if I'm writing this function and inside this function, there is this function being called again. So this is what is the definition of the first line. So in order to understand this first line in depth, how does it work and everything, let's take a super quick example to print 1 using a function, like using a recursive function. And once you have understood how recursion works, then we can understand the second line, which states until a specified condition is met. So generally there is a main. If you're using Java, that's a public static void main. If you're using C++, it's an int main. So if there is a main and I'm saying a function, let's assume I write the function as f. Okay, this is what I'm calling, and the f function is a void f function which says, hey, can you please print 1. In C++ it's going to be cout. In Java it's going to be system.out.println. And I call the same function again. So how does the program runs? First, the program comes to the int main, the execution. Then it comes to the f, and whenever you're calling the function, it straight away goes and calls this function void f. Okay, so I am going and calling this function void f. And the void f goes and prints this line 1. Yes, it executes this line 1. So I can say if I'm having an output screen, on that output screen at this moment 1 will be printed. Okay, after this line is executed, which states calling of the function, like calling of the self function f. So how will this work? Will it again call back like this, or how will it work? It eventually calls back the same function, but in order to understand in a much better way, what I'll do is, I know like if I just write it over here, there's a problem. So I'll just create a replica of this function and I'll write it over here. Okay, so I'm calling the replica of the function print 1 and again f. So this f again calls the same function. So basically it calls the same function again, because this function is in your memory, right? So it calls the same function again, and again this first line, yes, again this first line is executed. So again there will be an output of 1, and again after this particular line will be executed. So how will this particular line get executed? It again calls the same function in memory. So if I write down the f function again, print 1, f again, so this f will now go and call it. Perfect. So again this line will be executed, print 1. So again you print it 1, and again this line will be executed,
which again calls one more same function in the memory, which is void f, and again it prints 1, and after that again calls f. So this, if you write the program, this keeps on going for every day. Why? Because there is no stop condition. Yes, there is not a condition where you say, okay, wait, you're no more going to call me again and again and again. There is no such condition. Thereby, if I keep on writing, this will keep this will keep calling someone, again this will keep calling someone, again this will keep calling someone, and this will keep on going forever. So it's a non-ending recursion, or I can say an infinite recursion, because you're calling the function again and again and again, and there is no specified condition mentioned where you say that, hey, listen, now you're gonna stop. So if there is no specified condition mentioned, it's gonna fall under an infinite recursion, goes on calling. So if I show you this in my code editor, by the way, this is a Sublime text editor that I use. If you wanna use the same format, you can use my watch my video how to install a Sublime text. So this is for Sublime text. This is the int main. You can write it in Java as well. Print is calling cout of 1, which is again a print statement, and again print. So if I run this, if I just have a run on this, what will happen is it will print unlimited ones till it runs out of memory and throws a segmentation fault, because it just it did print so much, but after this it did ran out of memory because the program cannot keep on running. So this is what we call as stack overflow. Now what is stack overflow? Let's understand. Let's come back to the code. So if I show you the code, this was the main, correct? This was your main, and this main called this f, right? This main called this f, and after this f called this guy. So this f, yes, this f is not yet completed. This function call is not yet completed, so it will be waiting in the memory, correct? So the wait, so there is a stack. Yes, there is a stack. You don't need to know any specific definition of stack, you can just this was the main, correct? This was your main, and this main called this f, right? This main called this f, and after this f called this guy. So this f, yes, this f is not yet completed. This function call is not yet completed, so it will be waiting in the memory, correct? So the wait, so there is a stack. Yes, there is a stack. You don't need to know any specific definition of stack, you can just take it as a thumb rule. There is a stack. Whenever you read data structure algorithms in the next chapters, you'll understand what is a stack. But let's understand this function call. Yes, this function call calls this f, which indirectly calls this. So this function call is waiting. Why? Because this function call has called this. So this will wait. Where does this function call wait? I can say this function call waits in line number 2, because the line number 2 has been called and it is waiting. Now this function call is called, over here you're calling this guy. If you see, you're calling this guy. So apparently another function call with line number 2 is waiting. Now this function call is called, again this guy is called. So another function call at line number 2 is waiting. So if you just keep on calling them, yes, if you just keep on calling them again and again and again, so these particular function calls will be waiting in memory, because they are yet not completed. Now when do you call a function to be completed? If the last line has been successfully executed, but this has not been, because this call this guy and is what we call as stack overflow. Now remember, if you keep on calling, like in the example in the Sublime text, you kept on calling. It went print 1, and at the end, it stopped at 523037. Like it's compiler independent. In some compilers, it might go beyond that. So it did stop. Why? Because this particular stack space would be keeping up a lot of function calls, because these function calls are yet not completed. So it cannot just keep on piling up in the memory. That is when the segmentation fault happens, and it's commonly known as stack overflow, when there is numerous function calls waiting due to recursion, because you call the recursion, so one function call was waiting, you called another,
got another. So it kept on waiting. This is what.
methods are not written, because you'll end up having stack overflow, and this is the stack space. Like these function calls are awaiting. So in short, this is the definition, or the first line definition, when a function calls itself. I hope you have understood how the function calls itself. Now we are going to understand until a specified condition is met. What does this mean? Now if you carefully observe, we call this, then this guy called this, then this guy called this, then this guy called this, then again this guy called this, then this. It will keep on going, but there has to be a condition where you stop calling. That condition is something which is known as base condition. Yes, base condition. So let's quickly write down the function. So assume I'm writing an f, okay, and just assume there is a global variable. I've kept it as count equal to 0, a global variable, okay, and over here I'm writing print count, and I'm doing a counter plus plus.
and I'm calling the function. Okay. Now, if I keep on doing counter plus plus, what will this function like? I've already told you. From the main, if I call this function, what will happen? Can you think what will happen? Yes, I think you can. This function call will ultimately call this guy. Then the print of count will happen. And what's the value of count? Initially 0. So the output screen will print 0. Correct? The output screen will print 0. Next counter plus plus will happen. So the counter value will change to 1. And after this function will again be called to f of 0. And again print of count will be called. But this time counter value is 1. So 1 will be printed. Again you'll do a counter plus plus. So counter is increased to 2. Again you'll call this function. And again this will call someone else. So it keeps on going like this, and you'll be doing print count, counter plus plus again, and again f. So you keep on doing, and again print of count will print the next 2, counter plus plus will make it 3, and again this will call, this will keep on going. Now you need to stop it somewhere. So the condition that you use to stop it is known as the base condition. Yes, the condition that you use to say that here is no more gonna call, you're gonna stop. So assume I say that we're gonna print only up till 3. Assume I'm saying you are going to only print up till 3. So how will you modify it? So you'll basically say function. Let's understand how this works. Right at the starting of the function, you're gonna say initially the count is 0. You're gonna say if count is equal to 4, I am going to return. Okay, I am going to return. I'll explain you this as well. I am going to return. Else, I am going to print count. I am going to do a counter plus plus, and I am going to call the function. And in the main, yes, in the main, I am going to call this function. So if I ask, how will this work? Let's understand. So let's first keep the output screen. Let's see how this works. So I'm saying function. This function is called by a main. So it goes and calls this particular function. What is the first line? Counter is equal to 4. Is it? Counter is 0. So counter is not equal to 4. Perfect. Next, goes to the next line which says print count. What's the value of count? Value of count is 0. So you print 0. Correct? Next, counter plus plus. That means counter becomes 1. This line is executed. Next, function has been called. So in the stack space, this function will be awaiting. This function will await in the stack space. So in the stack space, this function, which is the line number 1, 2, 3, 4, 5. In line number 5, this function awaits. Why? Because it goes and again calls the same function in the memory, which this time checks is count equal to 4, and then returns. Print again the same thing, count, counter plus plus, f. This time is count equal to 4. No. Print count. Count's value is 1. So to make things simpler, let's keep count as 2, so that we don't have to print a lot of times. Or count as 3. Count as 3. Let's keep count as 3 so that we don't have to print a lot of things. So counter is printed. Again counter plus plus. So this line has been executed. Function has been called. So the moment you call the function, this guy goes into the stack space, saying that okay, another function call at line number 5 awaits to be completed. So you again go and say f of if counter is equal to 3. Is it? Counter is 2. So it's not. So this line is still not executed. You will print counter. Then you will do a counter plus plus. So print counter will be executed. Prints counter plus plus makes it 3. And then again you will call the function. Okay. Now this guy will again go into the stack space, saying I'm still awaited to be completed. And this time this function call will again call some other function. At this moment, counter equal to 3, and counter is, if you carefully observe, counter is indeed 3. Counter is indeed 3. So you can say that this line will be executed, and you will say return, Thereby all these lines will not be executed. All these next 3 lines will not be executed.
and the moment you return, this function is terminated. Remember, if you're writing a return statement inside a function, the function gets terminated then and there. So this says, okay, I'm over. So this function called this, but this is over. Now the moment you come over here, this guy gets out of the stack space saying, okay, it's time to be executed. So this line is over now, and this time it comes over here, and now it goes back. Why? Because the function call is over. If the function call is over, you can directly go back. Next it comes over here again. You can say this is done. Again goes back because this function call is again over. Now this is also completed, goes back to the F, and this line gets completed. So this is at the end completed. So what happened was, you called. This guy said I'm over. Went back. This is what we call as a specified condition, because you specified that counter has to be 3. Only till then, keep calling. The moment the counter was 3, if you carefully observe over here, the moment the counter was 3, you said stop and return. You stopped it. You no more called this function line because you stopped. And due to that stoppage, the other guys also completed their function calls. And this time there was no stack overflow because you did not call any further than 3 recursion calls. So this stop condition is what we call as base condition. Now remember, there can be a single base condition, there can be a multiple base condition. I'll be talking about all of them in the upcoming video, but I am assuming you have understood the entire stuff. I'll try to code this up. So if you see the code, now this time what we will do is, we'll keep a counter variable as 0, okay, and what we are doing is we are printing count, and we have something like count is equal to 3, then you can simply return, or else you can see out count and do a counter plus plus. This was the code. Now let's run it this time. So if I run it this time, you'll see just 0, 1, 2 being printed, because print went on and all the functions, and this is the simple dry run. Now what is the recursion tree? Now there's something in recursion which you'll be hearing a lot, recursion tree. Now if you carefully observe, is equal to 3, then you can simply return, or else you can see out count and do a counter plus plus. This was the code. Now let's run it this time. So if I run it this time, you'll see just 0, 1, 2 being printed, because print went on and all the functions, and this is the simple dry run. Now what is the recursion tree? Now there's something in recursion which you'll be hearing a lot, recursion tree. Now if you carefully observe, in order to explain you, I wrote the entire function, then I again wrote the entire function, then I again wrote the entire function, then I again wrote the entire function. But will someone do this every now and then? No. So this is basically truncated into a very simple thing, what we call. Now if you carefully observe, in order to explain you, I wrote dry run. Now what is the recursion tree? Now there's something in recursion which you'll be hearing a lot, recursion tree. Now if you carefully observe, in order to explain you, I wrote the entire function. So this is basically truncated into a very simple thing, what we call as recursion tree. So basically I'll say the first function was called, which is specifically this guy, and then this guy called f. So this guy again called f, then this guy again called f, and then this guy again called f. So again called f, but this guy returned. This guy, if you carefully observe, this guy returned. So what you'll do is you'll return. So
and you returned, and you returned, and you returned. So instead of writing the entire function, we basically represent them in terms of f. Okay, and that is what we call as recursion tree. We'll be talking about depth in recursion. Like, I'll be doing a lot more problems, so you'll understand what is the concept of recursion tree. So basically, the same function call is what I've represented in a smaller understood everything. Like what is recursion? Like calling the function within itself, infinite recursion. After that, you have understood what is a base case. The moment you say that, hey, listen, you are not going to perform the below lines, you go back. There's no more recursion being called. Go back. So that is what the base case is. You also understood what is a stack overflow or stack space. Stack space is the space where the remaining non-executed functions, like non-completed functions rather, because this function, this guy was called. So this function was yet to be completed. So stack space stores the yet to be completed ones, and there is something which is known as recursion tree. It's basically the diagram in which the function calls someone, then that guy calls someone. It's basically a shorter version of the diagrammatic explanation that I gave you. So I hope you've understood all these three things. Okay, so in the next video, I'll be doing couple, I think 3 or 4 problems. I'll be learning recursion in more depth. So just in case you have understood recursion in entire depth, like a theory concept, please make sure you like. So before starting this video, I'd love to thank the sponsor of this video, which is Code Studio. Now, if you are willing to practice interview problems topic wise, this is the place where you should look for, because Code Studio has over 2000 plus problems and has all the problem solution in C++, Java as well as Python. If you're looking for a guided path, then you can find for Python, for DBMS, for object-oriented programming, operating system, computer networks, system design, web development, any other thing that you're looking for, you'll find guided paths for every other thing over here. Also, if you're looking for any top company questions, let's say if you have an interview at Amazon, if you're looking for Amazon questions, you can get all the top Amazon coding questions via tag and all the solutions in C++, Java as well as Python. Also, if you have an interview schedule, you can read their interview experiences, where there are 600 plus interview experiences from companies like Amazon, Microsoft, Adobe, Google, etc. So what are you waiting for? Code Studio has a lot of free resources for interview preparation. The link will be in the description. Make sure you check it out. Hey everyone, welcome back to the channel. I hope you guys are doing extremely well. So today will be the lecture 2 of recursion playlist, which is basic recursion problems. Now in the previous video we did learn about recursion in depth, what is like. So please make sure you watch out the previous video, and after that only you start this video. So in this video we are going to solve some problems. The first one being print name 5 times. I'm assuming you can do that. Print linearly from 1 to n using recursion, definitely. Print linearly from n to 1. Then print linearly from 1 to n, but in some backtracking. Over here I'll teach you how can you do stuffs using kind of backtrack. And print from n to 1 again using backtracking. Okay, so I'm assuming you can do the first 3, but
still I'll recommend you to watch the entire video, because the concepts gets more clear the more you watch the videos. So let's take the first problem and do it. That is print name n times. Let's keep it n times. Okay, so generic way is definitely to run a for loop and print the name n times, but I want you to print your name n times using recursion. Yes, that's a catch here, using recursion. So how can you do this? You know, there will definitely be a main which will be calling print. Okay, so I'm saying n times. So what you can do is you can take the n from the user. Yes, you can take the n from the user. So input as n. In Java it will be integer.parseInt n, and then you can say a function with probably 0 and n. So over here I'm gonna teach you something which is very important, 1 and n. So this is the first time, and I'm saying till n you print it. Okay. Over here I'm going to teach you something. Change of parameters, which is very important. So I'm writing a void f. Okay. No global variables this time. I'm taking an integer I, and I'm taking an integer n. Okay. Over here, I know the base case is if I start from 1, I have to go till n.
In Java, it will be integer.parseInt n, and then you can say a function with probably 0 and n. So over here I'm gonna teach you something which is very important, 1 and n. So this is the first time and I'm saying till n you print it. Okay. Over here I'm gonna teach you something, change of parameters, which is very important. So I'm writing a void f. Okay, no global variables this time. I'm taking an integer I and I'm taking an integer n. Okay. Over here I know the base case is if I start from 1, I have to go till n. That's for sure. Like I have to print it n times. So I know the base case is definitely going to be till I haven't printed n times. So if at any moment I exceeds n, I'm going to say return, because I'm going to just print it n times. That's very simple. Coming from the previous class, it's very, very simple. This is what we call it as the base case. Hey everyone, welcome back to the channel. I hope you guys are doing some stuffs using backtrack, and print from n to 1 again using backtracking. Okay, so I'm assuming you can do the first 3, but still I'll recommend you to watch the entire video because the concepts gets more clear the more you watch the videos. So let's take the first problem and do it. That is print name n times. Let's keep it n times. Okay, so the generic way is definitely to run a for loop and print the name n times, but I want you to print your name n times using recursion. Yes, that's a catch here, using recursion. So how can you do this? You know, there will definitely be a main which will be calling print. Okay, so I'm saying n times. So what you can do is you can take the n from the user. Yes, you can take the n from the user. So input as n. In Java it will be integer.parseInt n, and then you can say a function with probably 0 and n. So over here I'm gonna teach you something which is very important, 1 and n. So this is the first time and I'm saying till n you print it. Okay. Over here I'm gonna teach you something, change of parameters, which is very important. So I'm writing a void f. Okay, no global variables this time. I'm taking an integer I and I'm taking an integer n. Okay, over here I know the base case is if I start from 1, I have to go till n. That's for sure. Like I have to print it n times. So I know the base case is definitely going to be till I haven't printed n times. So if at any moment I exceeds n, I'm going to say return, because I'm going to just print it n times. That's very simple. Coming from the previous class, it's very, very simple. This is what we call it as the base case. Remember? So base case is decided on the problem statement. So this is the base case. Okay. What after that? After that I will be like, okay, let's print it. So you will simply say print, let's assume my name is Raj, so I'll print Raj, and then I'll call f. I printed it once, I did came up as 1, so the next time I will call it as I plus 1 comma n. Okay, so let's understand how does the flow works so that you get a better perspective. So initially you'll be taking integer n, assume n is given as 3, assuming n is given as 3, and again I'll put the output screen over here, assuming n is given as 3, so n becomes 3, function says 1 and n.
So this guy calls this particular guy with i's value as 1, n's value as 3. So the function call, yes, the first function call that you make is of f of 1 comma 3. That's the first function call you made. Is the base case true? No, because 1 is not greater than 3. 1 is not greater than 3. No. Thereby you say print Raj. So Raj gets printed. Okay. Next you're saying function of I plus 1. So this guy calls a function with I plus 1. I was 1 over here. I gets incremented by 1 and calls the function by 2 and n is still 3. And over here you write the same line of code, I greater than n, because it's the same function which is being called. So in memory it's the same one, print Raj, and then f of I plus 1 comma n. Okay, this time let's understand if this base case is executed. I is 2, n is 3, so this will not be executed. Print Raj, again you print Raj, right? Remember this function of 1 of 3 called this f of 2 3. So in recursion tree it will be f of 2 comma 3. This is how you create the recursion tree. Now f of 2 3, this is printed, and now this portion. So this guy goes and again calls f of I plus 1, so 3 comma 3, and again you write the same lines, is I greater than n, then you say return. Definitely this is false. So thereby you again go and say print Raj, and you say f of I plus 1 comma n. So this is false. So this gets executed. So Raj is again printed. F of I plus 1. So this time f of 2 3 called f of 3 3. So I can just draw that f of 2 3 called f of 3 3. Now f of 3 3 calls I plus 1, which is f of 4 comma 3. And this moment I can say if I greater than n, then return becomes true. Why? Because I is 4, n is 3, and this guy comes out to be true. Thereby you are returning. So the moment you are returning, these lines will be of no use anymore. These lines will be of no use anymore. So you return. Now this is done. Now remember f of 3 3 called f of 4 3. So you can do it in the recursion tree as well. F of 3 3 called f of 4 3. Okay. So this is done. This is over. So I can say this function is over. Thereby you can return. This is done. So this function is over. Thereby this is over. You can return. Thereby this is over. You can definitely return back to where it was called. And now the program terminates. So this is how easily the recursion did work, and we did it in the parameters and not using any global variables. So I was able to print my name n number of times. Yes, I was able to print my name n number of times, and at f of 4 3 I returned. So this got completed, this returned, so this got completed, this returned. So during the course, this guy printed 1 Raj, this guy printed 1 Raj, this guy printed 1 Raj, and this guy hit the base condition and returned. So this is how you can easily do the first problem, which is print the name n times using recursion. Right? I hope you have understood this. So if I talk about the time complexity, space complexity, it's very simple. I can say the time complexity to be big O of n, because inside the functions, yes, inside the functions, these lines are like big O of 1, like they don't take any time. So apparently you're calling one function, that guy calls one more function, that guy calls one more function. So you're calling n functions. If you carefully observe, 1, 2, 3, 4. So you're calling n functions, like near about n functions. So I can say the time complexity to be big O of n. Yes, I can say the time complexity to be big O of n. And what is the stack space? So in space complexity, we generically assume the stack space. Now this guy would have been in the stack when you called. F of 1 comma 3 would have been in the stack. Then f of 2 comma 3 would have been in the stack. Then f of 3 comma 3 would have been in the stack. So they were waiting in the stack till this base case returned. They were waiting to be completed.
Thereby I can say the space complexity is also big O of n. Now this space complexity is hypothetical, like you're not using an array. The computer's internal memory uses the stack space. So thereby making the time complexity and the space complexity to be big O of n and big O of n. I hope that makes sense. So guys, we have done the first problem, which is print the name 10 times or 5 times. Okay, now let's do the next problem, which is print linearly from 1 to n. So basically, if n is given as 4, I want you to print 1, 2, 3, 4. Yes, this is what I want as the output. Okay, so how will you do this? Again, very much similar to the previous problem. If I write down the function, it's going to be I comma n, and it's going to be I greater than n, and you're saying return, and this time the print statement will be executing I, and then you can call f of I plus 1 n is a similar one. Just in place of the name you can print I, right? So that in the main, when you call the function, like you can take the input of n, and then when you call the function with 1 comma n, first time prints I, which is 1. Next time goes I plus 1, so 2. Similarly, you can just go on printing till whatever your n is. So it was quite similar to the previous one, where I'm easily able to print
1 to n, correct? Now it's a time to think it in the reverse order and do the next problem, which is print in the opposite fashion. Print in terms of n to 1. So like if I give you n equal to 4, you're going to print me 4, 3, 2, 1. Now can you do this? Can you do this? I think you can. Yes, you can. It's very simple. As of now, the code that we wrote started from I equal to 1, and then you did I plus 1, then you did again I plus 1, and you kept on calling. So if I have to print from 4, I can understand that the first I has to be 4 and the last has to be 1. After 1 or before 1 you don't print. So I can say I'll just write the function in the opposite order. It's going to be same I comma n, but this time it's going to be if I becomes lesser than 1, then I don't need to print and I can print the I, and this time I can call it I minus 1 comma n, and during the start, yes I repeat, during the start of main I can take the input of n. Definitely I can take the input of n and I can say f of n comma n to be called. Yes, I can say f of n comma n to be called, so that if assume n is given as 4 the first time, or assume the n is given as 3 to have a better understanding, the first time you call it 3 comma 3 and this calls it like 3 comma 3, correct? This line doesn't executes, print 3. So the output screen will definitely have something like 3, and then you call it as f of 2 comma 3, and again then you will call it as f of 1 comma 3, and again at the end you'll call it f of 0 comma 3,
and this 0 comma 3 will be executed, and you'll come back, you'll come back, and you'll come back. So automatically you print 3 2 1, as simple as that. So it's the main stuff is you just change it over here where you say I'm going to do I minus 1. This is the main stuff where you change, where you say I'm going to do I minus 1, correct? So again, we have also done the next problem, which is print in terms of n is to 1.
friends, welcome to Gates Measure. The topic is 3 level of abstraction in DBMS या जिसको हम बोलते हैं 3 schema architecture. इस टॉपिक को स्टार्ट कर करने से पहले आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट यू ऑल एंड स्पेशली जो मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज प्रेस द बेल बटन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। तो इस वीडियो से हम सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं कि व्हाट इज 3 स्कीमा आर्किटेक्चर एंड व्हाई इट इज यूज्ड। 3 स्कीमा का मतलब क्या है, मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है। तीन स्कीमा है। स्कीमा मतलब सबसे पहले तो हम इस वर्ड को समझते हैं, व्हाट इज अ स्कीमा। स्कीमा मींस स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मींस जिस डेटा को हम स्टोर कर रहे हैं, मतलब वो डेटा कोई भी स्टूडेंट का डेटा है, फैकल्टी का डेटा है, रेलवेज का डेटा है या फ्लिपकार्ट, अमेजॉन हमारा डेटा सेव कर रहे हैं, जो भी डेटा स्टोर कर रहे हैं हम, उस डेटा को स्टोर करने के लिए स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर मतलब जैसे कोई भी डेटा है, अगर मेरे पास एक डेटा है 1A20, अब इस डेटा को मतलब कोई रोल नंबर है 1, नेम है A, एज है 20, जस्ट फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग। अब इस डेटा को सेव करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने इसको एक टेबल में डाल दिया। टेबल में मतलब एक 2 डायमेंशनल टेबल में डाल दिया, जहां पे इस तरफ जो है मेरे पास कॉलम्स है, जैसे यहां पे मैंने लिख दिया रोल नंबर, नेम एंड एज, और यहाँ पे मेरी रो है। मतलब हम रिलेशनल डेटाबेस की बात जो मैंने ऑलरेडी पहले आपको बताया हुआ है कि जहां पे हम डेटा को स्टोर करते हैं टेबल की फॉर्म में। तो यहाँ पे स्कीमा क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, टेबल। और उस स्ट्रक्चर में आता क्या है, कॉलम्स आते हैं, रोज आती हैं। कॉलम्स में क्या है, रोल नंबर। तो रोल नंबर एक्चुअल में क्या है, रोल नंबर इज अ इंटीजर। तो इंटीजर का साइज कितना है, 2 बाइट है, 4 बाइट है। मतलब जो भी हम स्ट्रक्चर के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं, दैट स्ट्रक्चर इज एक्चुअली नोन एज स्कीमा। अब ये जो यहाँ पे 3 लेवल है, एक्सटर्नल स्कीमा या एक्सटर्नल लेवल, कॉन्सेप्चुअल लेवल या कॉन्सेप्चुअल स्कीमा, फिजिकल लेवल या फिजिकल स्कीमा, या जिसको हम इंटरनल लेवल भी बोलते हैं। अब ये 3 लेवल यहाँ पे क्यों बनाए हैं, एक्चुअल में 1970 में ये कॉन्सेप्ट आया 3 स्कीमा आर्किटेक्चर का। इस आर्किटेक्चर का मेन मोटिव क्या है, डेटा इंडिपेंडेंस। डेटा इंडिपेंडेंस मींस यूजर और डेटा आपस में डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करने चाहिए। मतलब यूजर को ये नहीं पता होना चाहिए कि डेटा जो है कहां पे स्टोर है। यूजर और डेटा ऑल्दो आपस में रिलेटेड है, क्योंकि यूजर का ही तो डेटा है, यूजर जब चाहेगा उस डेटा को कॉल करेगा, लेकिन वो डेटा कहां पे स्टोर है, कैसे स्टोर की है, ये सारी इंफॉर्मेशन हम यूजर से क्या रख रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट। इसको हम बोल रहे हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन। मतलब यूजर को पता है कि मेरा डेटा कहीं ना कहीं स्टोर है, लेकिन कहां स्टोर है, कैसे स्टोर है, ये चीज हम यूजर को हाइड कर रहे हैं। यूजर से हम ये चीज हाइड कर रहे हैं। ये अगर आप यूज कर रहे हो, आप सबसे मेन एग्जांपल है इसका जीमेल। हम सब लोग जीमेल को यूज कर रहे हैं, जीमेल में हमारी मेल्स है, उसमें हम फोटोज भी रखते हैं, उसमें हम इंपॉर्टेंट डेटा भी रखते हैं, लेकिन वो मेल्स एक्चुअल में कहां स्टोर है, फिजिकली आपको पता है कि कहां पे स्टोर है, दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में, बेंगलोर में, यूएसए में, यूके में, कहां स्टोर है, हमें उसका एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता। मतलब फाइल्स में स्टोर है, क्या फॉर्मेट है, ये चीजें हम जो है यूजर से हाइड रखते हैं। उस चीज को रखने के लिए हमने 3 लेवल बीच में बनाए, मतलब यूजर,
और डेटा, ये है डेटाबेस जहां पे सारा का सारा डेटा फिजिकली पड़ा है, और ये है यूजर। यूजर मतलब हम लोग। अब ये यूजर और डेटा के बीच में 3 लेवल बना दिए। इसका मेन मोटिव क्या है? डेटा को इंडिपेंडेंट, मतलब डेटा इंडिपेंडेंस, ताकि यूजर को हम एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड कर सकें। अब सबसे पहले जाता है मेरा एक्सटर्नल स्कीमा। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ, व्हाट इज द यूज ऑफ एक्सटर्नल स्कीमा? इसको हम व्यू लेवल भी बोलते हैं। मैंने ऑलरेडी यहां पे मेंशन किया हुआ है व्यू लेवल। व्यू लेवल मतलब कि यूजर को डेटा कैसे दिखाना है, यूजर को डेटा कैसे रिप्रेजेंट करना है, वो इस लेवल का काम है। ऑल्दो ये थ्योरेटिकल मॉडल है, लेकिन कहीं ना कहीं थ्योरेटिकल मॉडल के ऊपर ही प्रैक्टिकल बेस्ड होते हैं। मतलब आज के टाइम पे जितनी भी वेब एप्लीकेशंस बन रही है या मोबाइल एप्लीकेशंस बन रही है, मैं नहीं कह रहा कि वो डायरेक्ट इसी के ऊपर बेस्ड है, बट यस 1970 में कॉन्सेप्ट आया, इसके बाद बहुत सारी रिफाइनमेंट्स हुई, लेकिन आज के टाइम पे जितनी भी वेब एप्लीकेशंस को हम यूज कर रहे हैं मेजर, उनके बैकएंड पे कहीं ना कहीं इन स्कीमास को, इन कॉन्सेप्ट को यूज किया हुआ है। तो वही पॉइंट मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। इसको मैं एक सिंपल से एग्जांपल से अगर बताऊं, यूनिवर्सिटी का अगर मैनेजमेंट सिस्टम है, यूनिवर्सिटी के अंदर मैंने अगर यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लिया तो वहां पे मेरा लॉगिन आईडी पासवर्ड बना हुआ है। अब उस लॉगिन आईडी पासवर्ड को जब मैं फिल करता हूं तो 70 में कॉन्सेप्ट आया, इसके बाद बहुत सारी रिफाइनमेंट्स हुई, लेकिन आज के टाइम पे जितनी भी वेब एप्लीकेशंस को हम यूज कर रहे हैं मेजर, उन एडवांटेज ऑफ, व्हाट इज द यूज ऑफ एक्सटर्नल स्कीमा, इसको हम व्यू लेवल भी बोलते हैं। मैंने ऑलरेडी यहां पे मेंशन किया हुआ है व्यू लेवल। व्यू लेवल मतलब कि यूजर को डेटा कैसे दिखाना है, यूजर को डेटा कैसे रिप्रेजेंट करना है, वो इस लेवल का काम है। ऑल्दो ये थ्योरेटिकल मॉडल है, लेकिन कहीं ना कहीं थ्योरेटिकल मॉडल के ऊपर ही प्रैक्टिकल बेस्ड होते हैं। मतलब आज के टाइम पे जितनी भी वेब एप्लीकेशंस बन रही हैं या मोबाइल एप्लीकेशंस बन रही है, मैं नहीं कह रहा कि वो डायरेक्ट इसी के ऊपर बेस्ड है, बट यस 1970 में कॉन्सेप्ट आया, इसके बाद बहुत सारी रिफाइनमेंट्स हुई, लेकिन आज के टाइम पे जितनी भी वेब एप्लीकेशंस को हम यूज कर रहे हैं मेजर, उनके बैकएंड पे कहीं ना कहीं इन स्कीमास को, इन कॉन्सेप्ट को यूज किया हुआ है। तो वही पॉइंट मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। इसको मैं एक सिंपल से एग्जांपल से अगर बताऊं, यूनिवर्सिटी का अगर मैनेजमेंट सिस्टम है, यूनिवर्सिटी के अंदर मैंने अगर यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लिया तो वहां पे मेरा लॉगिन आईडी पासवर्ड बना हुआ है। अब उस लॉगिन आईडी पासवर्ड को जब मैं फिल करता हूं तो मेरे पास क्या इंफॉर्मेशन शो होती है? मेरे मार्क्स, मेरी अटेंडेंस, मेरी फीस का स्ट्रक्चर, मैंने कितनी पेमेंट की है, मतलब ये सारा क्या है? एक व्यू है। दैट व्यू विल बी गिवन टू द यूजर। बट क्या ये व्यू सारे लोगों का सेम होगा? नहीं। अगर सारे यूजर्स का व्यू सेम होता तो मेरे को यहां पे अलग अलग व्यू बनाने की जरूरत नहीं थी, एक व्यू से ही काम चल जाता। लेकिन अगर यही मैं बात करूं फैकल्टी, उसी यूनिवर्सिटी में फैकल्टी, तो फैकल्टी भी अटेंडेंस देख रहे हैं, फैकल्टी भी अपने मार्क्स देख रहे हैं? नहीं। जो स्टूडेंट है उनका अपना व्यू है, फैकल्टी का अपना व्यू। हाँ, फैकल्टी क्या कर सकते हैं? मार्क्स एंटर कर सकते हैं, स्टूडेंट की अटेंडेंस लगा सकते हैं, खुद लीव अप्लाई कर सकते हैं, खुद की सैलरी चेक कर सकते हैं, खुद की डिटेल जो है वो चेक कर सकते हैं। लेकिन क्या वही डिटेल स्टूडेंट चेक कर सकता है? नहीं। तो उस चीज को हमने रोकने के लिए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने क्या किया? हमने व्यू बना दिया। तो ये व्यू किसका है? स्टूडेंट का, जिसमें कुछ ऑथराइजेशंस, अगर मैं टेक्निकल टर्म में बोलूं तो ऑथराइजेशन मतलब हमने कुछ उसको ऑथराइज कर दिया कि तू ये भी देख सकता है, ये भी देख सकता है, कुछ चीजें तो रीड कर सकता है, लेकिन कुछ चीजें अपडेट नहीं कर सकता। जैसे जो मार्क्स मैंने लगाए वो अपडेट वो नहीं कर सकता, सिर्फ देख सकता है। तो ये है स्टूडेंट का व्यू। ऐसी एक व्यू हो जाएगा फैकल्टी का, फैकल्टी के पास अपनी ऑथराइजेशंस है। ऐसे ही अगर डीन है तो उनका अपना एक व्यू बन जाएगा
क्योंकि डीन के पास और ज्यादा ऑथराइजेशंस हैं। तो हमने एक्चुअल में क्या किया, सबको अपना अपना व्यू जो है वो प्रोवाइड कर दिया। आज के टाइम पे जितनी भी आप एप्लीकेशंस को यूज कर रहे हो उनमें भी क्या है, व्यू। एक जो नॉर्मल व्यू है जो हम नॉर्मल यूजर्स के लिए, एक व्यू होता है एडमिन, मतलब जो एडमिन, वो जो डेटाबेस का भी एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है, नेटवर्क का एक अलग से एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है, वहां पे अलग अलग जो है वो जो प्रोफाइल, मतलब जॉब प्रोफाइल्स है उनके लिए अलग अलग जो है वो व्यू हो सकते हैं। तो इस एग्जांपल में स्टूडेंट का अपना व्यू, फैकल्टी का अपना, डीन का अपना व्यू। ये व्यू मेरे को सिर्फ हेल्प कर रहा है कि क्या डेटा मैं देख पा रहा हूं। मतलब मैंने जैसे ही अपना लैपटॉप ऑन किया, मैंने अपनी यूनिवर्सिटी के जो मेरे पास यूआरएल है उसमें लॉगिन और पासवर्ड डाला, तो पहले फ्रंट पेज पे क्या आ रहा है, दैट फ्रंट पेज इज एक्चुअली अ व्यू। या आपको अगर मैं बताऊं तो आप कोई भी एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, लाइक फ्लिपकार्ट या अमेजॉन यूज कर रहे हो, उसमें लॉगिन कर रहे हो या पेटीएम यूज कर रहे हो, तो लॉगिन करते ही सबसे पहले आपको क्या व्यू आता है, दैट व्यू इज एक्चुअली अ एक्सटर्नल स्कीमा। उसके बाद आता है मेरा कॉन्सेप्चुअल स्कीमा। कॉन्सेप्ट कंसेप्चुअल स्कीमा का मतलब क्या है कि हम डेटा को किस तरीके से वहां पे रिप्रेजेंट करें, मतलब डेटा की एक्चुअल में स्टोरेज कैसे की हुई है। डेटा जो है मेरा यहां पे पड़ा है, लेकिन उसकी स्ट्रक्चर कैसे है। जैसे अगर मैं बात करूं यहां पे एक सिंपल सा स्टूडेंट का डेटा है, तो स्टूडेंट के डेटा में कौन कौन से कॉलम्स है, लाइक रोल नंबर है, नेम है, एज है, एड्रेस है, बहुत सारे कॉलम्स हो सकते हैं। तो हमें पहले ही ये चीज जो है वो डिफाइन करके रखनी पड़ती है। जब हम डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, हमें सबसे पहले उसका कॉन्सेप्चुअल व्यू बनाना पड़ता है। कॉन्सेप्चुअल स्कीमा और कॉन्सेप्चुअल को आप सिंपल से एग्जांपल से समझ सकते हो, ईआर मॉडल। अगर आपने इस चीज के बारे में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ईआर डायग्राम या ईआर मॉडल, तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। अदरवाइज Hello friends, welcome to Gates Measure. Today we are going to start with the very first lecture of DBMS, that is Database Management System. DBMS जो है बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है इन टर्म्स ऑफ गेट एग्जाम, यूजीसी नेट एग्जाम एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इवन अगर मैं सिंपल सी बात बोलूँ तो आज के टाइम पे फॉर अ बीटेक स्टूडेंट और इवन बीसीए स्टूडेंट, DBMS इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट।
मतलब ये आप ऐसे भी कह सकते हो कि इट इज़ अ वेरी इमर्जिंग सब्जेक्ट। मतलब बहुत, अगर मैं बात करूं आज से 6-7 साल पहले की, तो उस टाइम पे डीबीएमएस में से क्वेश्चंस जो है वो कम पूछे जाते थे इंटरव्यूज में, लेकिन आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो डेटाबेस के ऊपर पूछे जा रहे हैं। इसका जो मेजर रीज़न है वो ये है कि जितनी भी टॉप की कंपनीज है, मेजर जो एमएनसी कंपनीज जिनको हम बोलते हैं, टॉप 50 फॉर्च्यून कंपनीज जो है, जिनमें आपकी आती है फेसबुक है, गूगल है, अमेजॉन है, तो ये जो मेजर जितनी भी कंपनीज है जिनका सारा का सारा काम किसके ऊपर चल रहा है, डेटाबेस के ऊपर चल रहा है। ये सारी की सारी कंपनीज जिनका काम ही डेटाबेस के ऊपर चल रहा है, तो ऑब्वियसली दे विल आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम द डेटाबेस इटसेल्फ। तो इसीलिए इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डीबीएमएस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको, डीबीएमएस को मैं बिल्कुल इनिशियल लेवल से स्टार्ट कर रहा हूं। तो पहली टर्म मैंने यहां पे लिखी है डेटाबेस सिस्टम। मैं अभी डीबीएमएस कुछ नहीं बात कर रहा, मैं पहली जो टर्म बात कर रहा हूं यहां पे डेटाबेस सिस्टम। डेटाबेस सिस्टम क्या है? डेटाबेस सिस्टम जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, फेसबुक है, इवन चलो हम इंडिया की बात करें तो इंडियन रेलवेज, अगर हम आईआरसीटीसी की बात करें तो इंडियन रेलवे का अपना एक क्या है, डेटाबेस सिस्टम। फेसबुक का अपना क्या है, डेटाबेस सिस्टम। फ्लिपकार्ट का अपना क्या है, डेटाबेस सिस्टम। अब उस डेटाबेस सिस्टम में दो टर्म्स आती हैं, एक है डेटाबेस, एक है डीबीएमएस। मतलब डेटाबेस सिस्टम इज कंप्राइज्ड ऑफ टू things, one is a database and another one is DBMS। अब अगर मैं डेटाबेस की बात करूं, व्हाट इज द डेटाबेस? इसकी बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है, डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। अगर मैं यहां पे आपको एक बहुत ही लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूं, इट इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। नाम से ही पता लग रहा है डेटाबेस मतलब जहां पे बहुत सारा डेटा जो है वो कलेक्टेडली पड़ा है। लेकिन रिलेटेड डेटा का मतलब क्या है? जैसे हम इंडियन रेलवे की बात कर रहे हैं, आईआरसीटीसी के पास अपना एक डेटाबेस, बहुत बड़ा डेटाबेस है। अब उस डेटाबेस में होगा क्या होता है उसमें? जब आप लॉगिन करते हो तो क्या होता है? सबसे पहले जैसे ट्रेन की इंफॉर्मेशन है, मतलब आप कहीं पे जाना चाहते हो तो उसमें आप ट्रेन की इंफॉर्मेशन को फाइंड कर रहे हो। उसके अलावा आईआरसीटीसी के पास क्या होगा? पैसेंजर्स की इंफॉर्मेशन। कौन से पैसेंजर्स? जिन्होंने कभी ना कभी ट्रेन पे ट्रेवल किया है या आईआरसीटीसी के अकाउंट में लॉगिन किया हुआ है। क्या उनके पास पूरे इंडिया के लोगों का डेटा होगा? नहीं। तो मतलब यहां पे मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको कि डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। ऐसा नहीं कि हम किसी भी डेटा को आपस में क्लब कर दें। मतलब इंडियन रेलवेज के डेटा के साथ मैं इंडियन पासपोर्ट के डेटा को क्लब नहीं कर सकता। उनका डेटा अपना, दे हैव देयर ओन डेटाबेस। पासपोर्ट वालों का अपना डेटाबेस है, इंडियन रेलवेज वालों के पास अपना डेटाबेस है। दैट्स व्हाई इट इज अ रिलेटेड डेटा। अब यहां पे मैंने इसको फर्दर बाइफरकेट किया है। जो डेटाबेस है वो जनरली जो है स्ट्रक्चर्ड और इसको अनस्ट्रक्चर्ड बोलते हैं। इस वैसे तो जनरली तीन है, स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, बट एक्चुअली हमारा जो डीबीएमएस की अगर हम बात करें तो इतनी डिटेल में आज के टाइम पे नहीं आता, गेट में या यूजीसी नेट में। बट आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर डेटा और अनस्ट्रक्चर डेटा होता क्या है। स्ट्रक्चर डेटा क्या है? ऐसा डेटाबेस जिसको मैं किसी पर्टिकुलर शेप में या पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में स्टोर कर सकूं। और अनस्ट्रक्चर्ड मतलब जिसके लिए कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं है। जैसे मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल यहां पे लिखा है, इंडियन रेलवेज का डेटा या यूनिवर्सिटी का डेटा। अब यूनिवर्सिटी का डेटा या इंडियन रेलवेज का डेटा स्ट्रक्चर क्यों है? क्योंकि उनके लिए एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है। कौन सी स्ट्रक्चर है? सबसे इंपॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर यूज होती है फॉर स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस, दैट इज RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब मैं यहां पे आ रहा हूं इस टर्म पे, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अभी हम बात कर रहे हैं कि हमने डेटा को सेव किया, मतलब मेरे पास बहुत सारा डेटा, मैंने बैकएंड पे हार्ड ड्राइव्स में, सर्वर्स पे डेटा को सेव कर दिया। अब उस डेटा का करना क्या है? ऑब्वियसली यूजर उस डेटा को फेच करेंगे, यूजर वांट टू एक्सेस द डेटा। अब उस डेटा में वो कुछ अपडेट करेंगे, कुछ नया डेटा इंसर्ट करेंगे, कुछ पुराना डेटा डिलीट करेंगे। मतलब उनको ऑन एन एवरेज क्या ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं? इंसर्शन करना है, मतलब कुछ डेटा ऐड करना है, डिलीशन करना है, कुछ डेटा को डिलीट करना है, अपडेट करना है। अपडेट मतलब कोई पुराना डेटा है, लाइक एड्रेस है, किसी स्टूडेंट का एड्रेस कुछ और था, अपडेट हो गया, मतलब चेंज हो गया। तो यानी ये इन सबको हम क्या बोलते हैं? ऑपरेशंस। अब इन सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए मेरे पास कुछ ना कुछ सिस्टम तो होना चाहिए ना। तो वो सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के पास क्या कर दिया। अब उस डेटा का करना क्या है? ऑब्वियसली यूजर उस डेटा को फेच करेंगे, यूजर वांट टू एक्सेस द डेटा। अब उस डेटा में वो कुछ अपडेट करेंगे, कुछ नया डेटा इंसर्ट करेंगे, कुछ पुराना डेटा डिलीट करेंगे। मतलब उनको ऑन एन एवरेज क्या ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं? इंसर्शन करना है, मतलब कुछ डेटा ऐड करना है, डिलीशन करना है, कुछ डेटा को डिलीट करना है, अपडेट करना है। अपडेट मतलब कोई पुराना डेटा है, लाइक एड्रेस है, किसी स्टूडेंट का एड्रेस कुछ और था, अपडेट हो गया, मतलब चेंज हो गया। तो यानी ये इन सबको हम क्या बोलते हैं? ऑपरेशंस। अब इन सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए मेरे पास कुछ ना कुछ सिस्टम तो होना चाहिए ना। तो वो सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के पास क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑपरेशंस है जो यूजर को ईजीनेस प्रोवाइड करता है, ताकि यूजर जो है वो इजीली
डेटाबेस के अंदर ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सके। कौन से ऑपरेशन? इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन। अब डेटा कहां पे बड़ा हो सकता है? डेटा हो सकता है रिमोट एरिया पे प्रेजेंट। मतलब मैं फॉर एग्जांपल दिल्ली में बैठा हूं और हो सकता है कि डेटा मेरा स्टोर कहां पे है? मुंबई में है। तो डेटा जो है मुझे लोकेशन से कोई लेना देना नहीं है, मेरे को तो डेटा को एक्सेस करना है और उस डेटा में कुछ चेंज करना है। मतलब जैसे हम आईआरसीटीसी के डेटा को एक्सेस करते हैं, उसमें हम कुछ रिजर्वेशन करते हैं ट्रेन की, तो हमें पता है कि वो डेटा कहां पे स्टोर है? नहीं, बिकॉज यूजर को इन चीजों से लेना नहीं है, उनको सिर्फ अपने ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। और उन ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाने के लिए डीबीएमएस जो है वो हेल्प करता है। अब डीबीएमएस भी हमारे पास बहुत अलग अलग कंपनीज ने अलग अलग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनाए हैं। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल बताऊं तो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने बनाया सीक्वल सर्वर, और एप्पल वालों ने अलग अलग वर्जन बनाए सीक्वल सर्वर के भी। 2005, 2008, 2010, 12, 16 बहुत सारे अलग अलग वर्जन है। ऐसी ओरेकल के 9, 11, 12 सी, 16 अलग अलग जो है ये वर्जन है। ऐसी माई सीक्वल है ओरेकल वालों का ही है, और DB2 ये IBM का अपना जो है वो DBMS है डेटा को मैनेज करने के लिए। अब हम बात कर रहे थे यहां पे स्ट्रक्चर डेटा की। मैं सिर्फ इस पूरे में से सिर्फ स्ट्रक्चर डेटा के ऊपर फोकस कर रहा हूं, बिकॉज स्ट्रक्चर डेटा मैंने क्या बताया, ऐसा डेटा जिसको स्टोर करने के लिए प्रॉपर स्ट्रक्चर है। और वो स्ट्रक्चर कौन सी है? रिलेशन। रिलेशन मतलब टेबल। मतलब स्ट्रक्चर डेटा को हम किस फॉर्मेट में स्टोर करते हैं? टेबल की फॉर्मेट में। टेबल मतलब अभी आपको इसके बारे में अगर नहीं भी पता कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल से पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझा रहा हूं यहां पे। मतलब मेरे पास जैसे एक्सेल की फाइल अगर आपने देखी हो तो उसमें क्या होता है? कॉलम्स होते हैं, रोज होती हैं। आप उस डेटा को हम किस फॉर्मेट में स्टोर करते हैं? टेबल की फॉर्मेट में। टेबल मतलब अभी आपको इसके बारे में अगर नहीं भी पता कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल से पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझा रहा हूं यहां पे। मतलब मेरे पास जैसे एक्सेल की फाइल अगर आपने देखी हो तो उसमें क्या होता है? कॉलम्स होते हैं, रोज होती हैं। आप उसको ही इसके साथ कंपेयर कर सकते हो। मतलब एक टेबल क्या है? जिसमें कुछ कॉलम्स हैं और उसमें क्या है? डिफरेंट रोज हैं। अब इस टेबल को हम टेक्निकल फॉर्म में बोलते हैं रिलेशन। अब यहां पे मेरे कहने का पॉइंट क्या है कि हम डेटा को, स्ट्रक्चर डेटा को स्टोर कैसे करते हैं? इसके भी बहुत अलग अलग तरीके हो सकते हैं, बट द मोस्ट यूजेबल मेथड इज रिलेशन। मतलब डेटा को कैसे स्टोर करो? रिलेशन की फॉर्म में। टेबल की फॉर्म में। अब जब डेटा को मैं स्टोर कर रहा हूं रिलेशन की फॉर्म में, तो ऑब्वियसली मेरे पास मैनेजमेंट सिस्टम भी कुछ ऐसा ही चाहिए। मतलब मेरे पास प्लेटफॉर्म कुछ ऐसा चाहिए जो रिलेशन को ही सपोर्ट करे। मतलब जब भी यूजर डेटा को एक्सेस करे, मेरे को रिलेशन शो। जब भी मैं यूजर डेटा को स्टोर करे, रिलेशन में जाके डेटा स्टोर। जैसे आईआरसीटीसी। अब अगर आपको याद हो कभी आपने आईआरसीटीसी में लॉगिन किया हो, तो आप अगर उसमें सबसे पहले चेक करें, जब आप सोर्स डेस्टिनेशन वगैरह डालते हैं तो आपको सारी ट्रेन की इंफॉर्मेशन आ जाती है। और वो किस फॉर्मेट में आती है? टेबल की फॉर्म में, जिसमें पहला कॉलम क्या होता है? ट्रेन नंबर, ट्रेन का नेम, और भी अलग अलग लाइक नंबर ऑफ कंपार्टमेंट, अपार्टमेंट्स, टाइप ऑफ सीट्स, डिपार्चर टाइम, डिपार्चर डेट, डिफरेंट वो अलग अलग डेटाबेस का अपना अपना कॉलम्स है। अभी हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल सी फॉर्म में बात कर रहे हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ किसके बारे में बात कर रहा हूँ? स्ट्रक्चर डेटा। बिकॉज बीटेक में जो हम आरडीबीएमएस पढ़ते हैं, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसमें सारी की सारी जो हम फोकस कर रहे हैं वो किसके ऊपर? स्ट्रक्चर के ऊपर। गेट में भी इसी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, इवन यूजीसी नेट में, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अभी जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो स्ट्रक्चर डेटा। और स्ट्रक्चर डेटा को स्टोर कैसे करते हैं? रिलेशन की फॉर्म में। अब रिलेशंस को स्टोर करना, उनको एक्सेस करना, उसके
ये मैं फर्दर वीडियोस में आपको एक्सप्लेन करूंगा ईआर मॉडल। यहां पे आप सिर्फ ये समझ लो कि ईआर मॉडल क्या है, एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल है। डेटा एक्चुअल में यहां स्टोर है, लेकिन वो डेटा स्टोर कैसे किया हुआ है, हमने उसको के लिए मेरे को क्या चाहिए, मैनेजमेंट सिस्टम। तो डीबीएमएस क्या है, एक मैनेजमेंट सिस्टम, लेकिन किसके लिए चाहिए, रिलेशन के लिए। तो इसीलिए यहां से एक नई टर्म आ गई आरडीबीएमएस, दैट इज रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो यही हमारा सब्जेक्ट है, दैट इज रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ऐसा सिस्टम जहां पे हम इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, बहुत सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन परफॉर्म किस पे करेंगे, रिलेशंस पे। सो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द आरडीबीएमएस। आई फॉरगॉट टू एक्सप्लेन अबाउट द अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। एक्चुअली अनस्ट्रक्चर्ड डेटा मतलब ऐसा डेटा जिसको स्टोर करने के लिए कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं है, मतलब प्री डिफाइंड कोई स्ट्रक्चर नहीं है कि जहां पे मैं उस डेटा को स्टोर कर सकूं। क्यों? क्योंकि अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में जो मेजॉरिटी ऑफ द डेटा वो क्या है, लाइक फोटोज हैं, वीडियोज हैं, जिनका कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं। मतलब कभी फोटो, जैसे वेब पेज की अगर मैं बात करूं, वेब पेज में क्या है, वेब पेज इज अ कलेक्शन ऑफ फोटोज, वीडियोज, चैट्स, कभी उनका कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं है, वो किसी भी फॉर्मेट में हो सकते हैं। मतलब हो सकता है कि वेब पेज में पहले वीडियो आई, फिर आपकी इमेज आई, फिर उसमें कुछ टेक्स्ट आया, या हो सकता है पहले कुछ पैराग्राफ आया। लेकिन स्ट्रक्चर डेटा जो है वो हमेशा क्या होगा, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में, और उसका फॉर्मेट क्या है, टेबल। तो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के बारे में हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे, बिकॉज हमारा जो मेन टॉपिक है, हमारा जो सब्जेक्ट है आरडीबीएमएस, वो सिर्फ स्ट्रक्चर डेटा के ऊपर काम कर रहा है। दिस इज जस्ट अ एक्स्ट्रा थिंग आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन टू यू। एंड अनदर वन पॉइंट इज, आज के टाइम पे अगर मैं बात करूं तो 90% ऑफ द डेटा ऑन दिस अर्थ इज एक्चुअली अनस्ट्रक्चर्ड। तो आज के टाइम पे जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं, वो सारी की सारी, ज्यादा से ज्यादा जो टेक्नोलॉजी है वो किसके ऊपर आ रही है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के ऊपर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि स्ट्रक्चर डेटा बंद हो गया, स्ट्रक्चर डेटा भी एग्जिस्ट है, बट अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के ऊपर ज्यादा टेक्नोलॉजी आ रही है, जो आज के टाइम पे सबसे ज्यादा यूज हो रही है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल अगर बताऊं तो बिग डेटा की अगर हम बात करें या हडूप की बात करें, ये सारे जो है वो टर्म्स कहां पे यूज करते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ स्ट्रक्चर डेटा और आरडीबीएमएस के बारे में एक्सप्लेन करूंगा मैं फर्दर वीडियोज में। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट स्मैशर। द टॉपिक इज फाइल सिस्टम वर्सेस डीबीएमएस। तो फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया द बेसिक इंट्रोडक्शन एंड द डेफिनेशन ऑफ डीबीएमएस। लेकिन अब हमारे माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है,
I minus 1. This is the main stuff where you change, where you say I'm going to do a I minus 1, correct? So again, we have also done the next problem, which is print in terms of n is to 1. So 3 problems have been done. Now these were very basic. I want you to change it and think it in the reverse order. What if I want to print from 1 to n, but I don't want to do I plus 1. Instead, I say that the recursion call starts from n comma n usually. Like to give a better brief, let me just explain. I am saying print from 1 to n, print from 1 to n, but I am not going to allow you to use plus 1. Like generally from 1 to n was meaning f of I plus 1 comma n was the function call, was the recursive function call that you are making. I'm not allowing you to do that. I'm not allowing you to do plus 1. So how will you do this? So over here I'm going to teach you something as backtracking. Okay, so let's understand backtracking. Since I'm not allowing you to use plus, you have to use minus. So what I'll do is I comma n, okay, as usual. This time it will be like if I at any time goes lesser than 1, you return f of I minus 1 comma n, and right after that I'm writing print of I. Okay, so over here I'm writing the main function, over here I'm writing the main function, and what I'm writing is, okay, main, let's take the input of n and let's call f of n comma n. So basically what I did was I said that you cannot use this plus, thereby you can use minus 1. Why? Because I wanted me to teach you what if I write the print line after the recursion call. What happens? Let's understand. So again, let's quickly give the output screen and assume n is given as 3. So the first call is 3 comma 3. Thereby the first call goes as 3 comma 3. The first call goes as 3 comma 3. Now let's understand this. Does this line execute I lesser than 1? No, because I is 3 and it doesn't execute. Perfect. Next, I'm saying f of I minus 1. So this function call will go. Remember this. The print line will not be executed. The function call will go. Perfect. Let's call the function call and I'm saying I minus 1. That's 2 comma 3. And again, let's write if I is lesser than 1, then return. And let's write f of I minus 1 comma n. And then let's write the print of I and then this. Okay. So let's see if the first line executes. Again, no, because I is 2. Doesn't. This time again you call the function with I
minus 1, which is 2 minus 1, 1, 1 comma 3. And this time you write, if I is lesser than 1, you return, and you say f of I minus 1 comma n, print of I. Okay, let's see what happens this time. F of 1 comma 3, I is 1, doesn't executes. F of I minus 1 goes and calls this. With f of I minus 1 means 0 comma 3. If I lesser than 1, return. I'm not writing the remaining couple of lines. I is 0. So this line this time is indeed true. Is indeed true. And if this line is true, what happens? You basically say return executes. So you return. So this function line has been executed. Correct? Now the print comes over here, because after this the line of execution comes over here and it says print I. What's the value of I? 1. So the output will be 1. Next, the execution line comes over here, which means the function has been executed. Correct? Go back. Went back. This line has been executed. Thereby the function line comes to the next. This print is I. What's the value of I? 2. Printed. Next, the line of execution goes here, which means this function has been executed. Go back. This has been executed. Go to the next. Print I's value is 3. Thereby this line has been executed. Go here. Hence go back. So even by starting from 3, I was able to output in the linearly increasing order. So it's not necessary that you have to start from 1 in order to print from 1, 2, 3. You can start from the back and you can do the task after the function call. So basically, by doing this, what you did was you made it mandatory that this print line is executed at the first, because you kept it after the function call. So unless and until this function call is over, this line would have never been executed. So you made sure the last guy has been executed first. Why? How did you make sure that the last guy, because this was the last guy, has been executed first? How was this function completed first? By making sure the print line is after the function call, because this will only be executed if the base case is true. Thereby this gets executed, then this gets executed, then this. It's the opposite way you made it, by writing after the function. Got it? So this is how you print from 1 is to n. Now I will be asking you to do the other one. So this is what I've done, but by backtrack, this has been done. I want you to do the other way. I want you to print from n to n. Basically, if I give you as n equal to 3, I want you to print 3 to 1, but I don't want you to use this I minus 1 comma n. I don't want you to use this. Okay, so I will not solve this. I want you people to answer in the comment section about this. Let's see if you have understood the entire concept. You should be able to do it. Yes, you should be able to do it. So remember, if I write this as a recursion tree, it's very simple. You started with f of 3 comma 3, then you went to f of 2 comma 3, then you went to f of 1 comma 3, then you went to f of 0 comma 3, which indirectly stated I'm over. Then the print line executed of 1. Then you said, after this the print of 2 was executed, and so this the print of 3 was executed. So this is how the recursion tree will look like for this particular stuff. So I hope guys you have understood all the problems, and you have understood the recursion in depth for the basic kind of problems of 1D recursion. So just in case you did, please make sure you like this.
डीबीएमएस से पहले कौन सा सिस्टम यूज होता था, या मतलब उस सिस्टम रोल बेस्ड कि डीबीएमएस से पहले कौन सा सिस्टम यूज होता था, या मतलब उस सिस्टम में क्या प्रॉब्लम थी जो डीबीएमएस ने आके रिमूव की, या जिसको हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि डीबीएमएस में ऐसी क्या एडवांटेजेस हैं जो इसने पुराने सिस्टम को या ट्रेडिशनल सिस्टम को रिमूव किया। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फाइल सिस्टम की, मतलब डीबीएमएस से पहले क्या यूज होता था, फाइल सिस्टम। अब फाइल सिस्टम इट डजंट मीन कि आज के टाइम पे यूज नहीं होता। मैं इसका बहुत ही एक स्मॉल सा और रियल लाइफ एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जो सिनेरियो था 1970s का, वहां पे डेटा को कैसे एक्सेस करते थे कि जैसे मैं यूजर हूं, मेरे सिस्टम में डेटा है और मैं उस डेटा को एक्सेस कर रहा हूं, मतलब मैं एज ए यूजर डेटा को सेव कर रहा हूं और मैं ही डेटा को यूज कर रहा हूं। अब इस केस में फाइल सिस्टम का हम यूज कर सकते हैं बिकॉज यूजर हमेशा डेटा को मैनेज कैसे करता है, फाइल्स की फॉर्म में। तो मेरे लिए बहुत ही ईजी है, मैं अपनी ड्राइव्स बना के जैसा कि हम आज के टाइम पे भी हम देखें तो हमारे लैपटॉप्स में क्या आता है, साथ में फाइल सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इनबिल्ट होता है फाइल सिस्टम, जैसे कि CIFS, NFS फाइल सिस्टम्स यूज होते हैं। तो उनमें क्या होता है कि जो भी डेटा आपका है उस डेटा को आप फाइल्स की फॉर्म में, जो हम ड्राइव्स बनाते हैं, ड्राइव्स के अंदर फोल्डर्स बनाते हैं, सब फोल्डर्स बनाते हैं। सिनेरियो था 1970s का, वहां पे डेटा को कैसे एक्सेस करते थे कि जैसे मैं यूजर हूं, मेरे सिस्टम में डेटा है और मैं उस डेटा को एक्सेस कर रहा हूं, मतलब मैं एज ए यूजर डेटा को सेव कर रहा हूं और मैं ही डेटा को यूज कर रहा हूं। अब इस केस में फाइल सिस्टम का हम यूज कर सकते हैं बिकॉज यूजर हमेशा डेटा को मैनेज कैसे करता है, फाइल्स की फॉर्म में। तो मेरे लिए बहुत ही ईजी है, मैं अपनी ड्राइव्स बना के, जैसा कि हम आज के टाइम पे भी हम देखें तो हमारे लैपटॉप्स में क्या आता है, साथ में फाइल सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इनबिल्ट होता है फाइल सिस्टम, जैसे कि CIFS, NFS फाइल सिस्टम यूज होते हैं। तो उनमें क्या होता है कि जो भी डेटा आपका है उस डेटा को आप फाइल्स की फॉर्म में, जो हम ड्राइव्स बनाते हैं, ड्राइव्स के अंदर फोल्डर्स बनाते हैं, सब फोल्डर्स बनाते हैं, हायरार्किकल फॉर्म में डेटा को स्टोर करते हैं। दैट इज व्हाट अ यूज ऑफ द फाइल सिस्टम। लेकिन डीबीएमएस फिर क्यों यूज कर रहे हैं हम? जब फाइल सिस्टम प्रॉपर्ली चल रहा है तो देन व्हाई वी आर यूजिंग द डीबीएमएस? बिकॉज वी आर नाउ यूजिंग द क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर मींस कि जो मेरा डेटा है वो सिर्फ मेरे पास नहीं है, मतलब मेरा डेटा को सिर्फ मैं ही एक्सेस नहीं कर रहा, मेरा डेटा एक सेंट्रलाइज्ड लोकेशन पे पड़ा है और उस डेटा को ऑल ओवर द वर्ल्ड यूजर यूज कर रहे हैं। मतलब कि अगर मैं इसको सिंपल से डायग्राम से दिखाऊं, ये मेरा एक सर्वर है, सर्वर के साथ मेरा डेटा पड़ा है और इस सर्वर के साथ अटैच्ड है बहुत सारे यूजर्स जो ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रेजेंट है और वो उस डेटा को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस केस में जहां पे मेरे यूजर जो है वो सारे ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रेजेंट है, अब वो जब डेटा को यूज कर रहे हैं तो उस टाइम पे हम फाइल सिस्टम को यूज नहीं कर सकते, डीबीएमएस को यूज करना पड़ेगा। द रीजन बीइंग इज, द फर्स्ट पॉइंट मैं यहाँ पे जो डिस्कस करने जा रहा हूँ फाइल सिस्टम वर्सेस डीबीएमएस, पहला पॉइंट है कि जब हम डेटा को सर्च करते हैं, जैसे अगर हम IRCTC की बात करें, अगर हम IRCTC में एक ट्रेन को सर्च कर रहे हैं, लेट्स से कि मैं 1 KB के डेटा को सर्च कर रहा हूँ, 1 KB के डेटा को, मतलब मुझे कोई पर्टिकुलर ट्रेन की डिटेल फाइंड करनी है। अब उस ट्रेन की डिटेल फाइंड करनी है, अगर वहां पे फाइल सिस्टम का यूज होगा तो एक्चुअल में क्या होगा, मेरे पास पूरी की पूरी फाइल आ जाएगी, किसकी, पूरी की पूरी ट्रेन के डेटा की फाइल आ जाएगी। मतलब आई जस्ट वॉन्ट टू सर्च 1 KB ऑफ डेटा, लेकिन मेरे पास डेटा कितना आ रहा है, अप्रॉक्सीमेट 25 GB। जस्ट फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग 25 GB का डेटा ट्रेवल हो रहा है और उसमें टाइम लगेगा। मेरे सिस्टम में 25 GB आ रहा है, अननेसेसरी मेमोरी यूज हो रही है और उस डेटा में से मुझे सिर्फ 1 KB का डेटा सर्च करना है, विच इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग। इसीलिए अब आता है डीबीएमएस का कॉन्सेप्ट। डीबीएमएस क्या बोलता है, आपका ये 25 GB का डेटा है वो किसके पास पड़ा है, सर्वर के पास, मतलब इंडियन रेलवेज के सर्वर के पास वो सारा का सारा डेटा पड़ा है। अब यूजर क्या करेगा, वो एक सिंपल सी क्वेरी लिखेगा बाय यूजिंग द SQL और उस क्वेरी के बेस पे उसके पास कितना डेटा आएगा, सिर्फ 1 KB का। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। तो यहां पे मेरी जो सर्चिंग है वो क्या हो रही है, यहां पे फास्ट हो रही है और मेमोरी जो यूटिलाइजेशन है वो भी क्या हो रही है, एफिशिएंट। द सेकंड पॉइंट इज, जब भी हम डेटा को सर्च करते हैं बाय यूजिंग द फाइल सिस्टम, वी रिक्वायर एट्रीब्यूट्स। भी हम लिखेगा बाय यूजिंग द SQL और उस क्वेरी के बेस पे उसके पास कितना डेटा आएगा, सिर्फ 1 KB का। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। तो यहां पे मेरी जो सर्चिंग है वो क्या,
हो रही है यहाँ पे फास्ट हो रही है, और मेमोरी जो यूटिलाइजेशन है वो भी क्या हो रही है, एफिशिएंट। द सेकेंड पॉइंट इज, जब भी हम डेटा को सर्च करते हैं बाय यूजिंग द फाइल सिस्टम, वी रिक्वायर, वो भी क्या हो रही है, एफिशिएंट। द सेकेंड पॉइंट इज, जब भी हम डेटा को सर्च करते हैं बाय यूजिंग द फाइल सिस्टम, वी रिक्वायर द एसक्यूएल, और उस क्वेरी के बेस पे उसके पास कितना डेटा आएगा, सिर्फ 1 KB का। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। तो यहां पे मेरी जो सर्चिंग है वो क्या हो रही है, यहाँ पे फास्ट हो रही है, और मेमोरी जो यूटिलाइजेशन है वो भी क्या हो रही है, एफिशिएंट। द सेकेंड पॉइंट इज, जब भी हम डेटा को सर्च करते हैं बाय यूजिंग द फाइल सिस्टम, वी रिक्वायर एट्रीब्यूट्स। मतलब मुझे उस फाइल का नेम, फाइल की लोकेशन, फाइल की परमिशंस, लाइक वो जो डेटा मैं एक्सेस कर रहा हूं उस डेटा का मेटा डेटा मेरे को चाहिए पहले। जब वो मेटा डेटा मेरे को मिलेगा, मेटा डेटा क्या होता है, डेटा अबाउट डेटा, मतलब किसी पर्टिकुलर फाइल के बारे में जो डेटा है वो डेटा पहले मुझे चाहिए। जैसे हम नॉर्मल अपने सिस्टम में एक्सेस करते हैं फाइल, तो लोकेशन आती है C:#folder1:folder1/folder2, दैट इज व्हाट अ लोकेशन। जब वो मेरे पास होगी तभी मैं उस डेटा को एक्सेस कर सकता हूं। लेकिन यहां पे DBMS में कोई लोकेशन नहीं है, इट इज टोटली इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब जो यूजर है, यूजर को पता ही नहीं एक्चुअल में डेटा कहां पे स्टोर है। यूजर अपने लैपटॉप से, अपने सिस्टम से सिर्फ एक क्वेरी लिखेगा बाय यूजिंग एनी प्लेटफॉर्म। वो प्लेटफॉर्म क्या हो सकता है, कोई वेब एप्लीकेशन हो सकती है, जो मेरे को, जैसे हम IRCTC में करते हैं, हम IRCTC के वेब एप्लीकेशन या मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, और उस एप्लीकेशन पे और वेब एप्लीकेशन पे हम एक रिक्वेस्ट भेजते हैं, और वो रिक्वेस्ट सर्वर पे जाती है और सर्वर रिस्पॉन्ड करता है। और वो रिस्पॉन्ड करने के लिए मेरे को कोई एट्रीब्यूट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ डेटा एक्सेस करना है, और उस डेटा को एक्सेस करने के लिए देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एट्रीब्यूट्स। तो यहां पे मेरी सर्चिंग जो है वो इजीनेस है, मतलब यहां पे इजीनेस प्रोवाइड कर रहा है DBMS। थर्ड पॉइंट इज कॉन्करेंसी। कॉन्करेंसी का मतलब क्या है, आज के टाइम पे ये सबसे ज्यादा जो ये यूज होता है कॉन्सेप्ट, दैट इज अ कॉन्करेंसी। मतलब कॉन्करेंट एक्सेस, मतलब मल्टीपल पर्सन एक ही टाइम पे, मल्टीपल पीपल दे आर एक्सेसिंग द डेटा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे। जब अगर हम बात करें IRCTC की, इंडियन रेलवे के एग्जांपल को ही मैं डिस्कस कर रहा हूं, बिकॉज यहाँ पे जो DBMS है एक्चुअल में क्या है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है स्टार्टिंग में, लेकिन अगर हम हर एक कॉन्सेप्ट के साथ एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देख ले या रियल लाइफ एग्जाम्पल को समझ ले, तो आप इस कॉन्सेप्ट को कभी भी भूलेंगे नहीं। अब हम बात कर रहे हैं कॉन्करेंसी की। तो जो हमारा इंडियन रेलवे का सिस्टम है, अगर हम इंडियन रेलवे को एक्सेस कर रहे हैं, मैं एक ट्रेन की बुकिंग कर रहा हूं, तो आपको क्या लगता है कि अकेले आप ही यूज कर रहे हैं उस टाइम पे इंडियन रेलवे के सिस्टम को? नहीं। अगर एक सर्वे मैंने पढ़ा था, उस सर्वे के अकॉर्डिंग रोज 2 से 3 लाख ट्रांजैक्शन होती हैं IRCTC के सर्वर पर। अब इतनी ट्रांजैक्शन हो रही है, मतलब एक टाइम पे हो सकता है 1000-2000 ट्रांजैक्शन चल रही है। अब इस टाइम पे अगर इतने यूजर जो डेटा को एक्सेस कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द कॉन्करेंसी। और ये कॉन्करेंसी के लिए फाइल सिस्टम में कोई प्रोटोकॉल नहीं है। मतलब अगर 1000 बंदे एक ही टाइम पे फाइल को एक्सेस कर जाए, तो वहां पे डेटा में इनकंसिस्टेंसी आ सकती है। लेकिन जो DBMS है वो प्रॉपर प्रोटोकॉल्स प्रोवाइड करता है। इसमें कॉन्करेंसी के लिए प्रोटोकॉल्स हैं, जैसा कि अगर 2 बंदे रीड कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही टाइम पे रीड राइट कर रहे हैं प्रॉब्लम है, राइट रीड में प्रॉब्लम है, राइट राइट में प्रॉब्लम है। ये सारा हम जब ट्रांजैक्शन कंट्रोल एंड कॉन्करेंसी का यूनिट आएगा, जब टॉपिक आएगा, वहां पे डिटेल में देखेंगे। अभी आप सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कॉन्करेंसी के लिए DBMS में प्रोटोकॉल्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन फाइल सिस्टम में कोई प्रोटोकॉल एग्जिस्ट नहीं करते, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती। फोर्थ पॉइंट इज सिक्योरिटी। अगर हम इंडियन रेलवे को एक्सेस कर रहे हैं, मैं एक ट्रेन की बुकिंग कर रहा हूं, तो आपको क्या लगता है कि अकेले आप ही यूज कर रहे हैं उस टाइम पे इंडियन रेलवे के सिस्टम को?
नहीं, अगर एक सर्वे मैंने पढ़ा था, उस सर्वे के अकॉर्डिंग रोज 2 से 3 लाख ट्रांजैक्शन होती हैं IRCTC के सर्वर पर। अब इतनी ट्रांजैक्शन हो रही है, मतलब एक टाइम पे हो सकता है 1000-2000 ट्रांजैक्शन चल रही हैं। अब इस टाइम पे अगर इतने यूजर जो डेटा को एक्सेस कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द कॉन्करेंसी। और ये कॉन्करेंसी के लिए फाइल सिस्टम में कोई प्रोटोकॉल नहीं है। मतलब अगर 1000 बंदे एक ही टाइम पे फाइल को एक्सेस कर जाए तो वहां पे डेटा में इनकंसिस्टेंसी आ सकती है। लेकिन जो DBMS है वो प्रॉपर प्रोटोकॉल्स प्रोवाइड करता है। इसमें कॉन्करेंसी के लिए प्रोटोकॉल्स हैं, जैसा कि अगर 2 बंदे रीड कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही टाइम पे रीड राइट कर रहे हैं प्रॉब्लम है, राइट रीड में प्रॉब्लम है, राइट में प्रॉब्लम है। ये सारा हम जब ट्रांजैक्शन कंट्रोल एंड कॉन्करेंसी का यूनिट आएगा, जब टॉपिक आएगा, वहां पे डिटेल में देखेंगे। अभी आप सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कॉन्करेंसी के लिए DBMS में प्रोटोकॉल्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन फाइल सिस्टम में कोई प्रोटोकॉल एग्जिस्ट नहीं करते, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती। फोर्थ पॉइंट इज सिक्योरिटी। Yes, security. That is again a very important issue nowadays. Security का मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पे एक डेटा को एक्सेस कर रहा हूँ तो क्या उसी डेटा को कोई भी एक्सेस कर सकता है, या यहाँ पे कुछ रोल बेस्ड काम होना चाहिए। रोल बेस्ड मतलब जैसे हम यूनिवर्सिटी की बात करें, मैं अगर यूनिवर्सिटी में वहाँ पे पढ़ा रहा हूँ एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, वहाँ पे स्टूडेंट भी हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं, एडमिन के भी लोग हैं, डीन भी है। तो जो डेटा मैं एक्सेस कर रहा हूँ, क्या वही डेटा स्टूडेंट भी एक्सेस कर रहे हैं, क्या वही डेटा डीन भी एक्सेस कर रहे हैं, या वहाँ पे कोई हेरेडिकल सिक्योरिटी है। हेरेडिकल मतलब इसको हम बोलते हैं रोल बेस्ड सिक्योरिटी। रोल बेस्ड का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास कुछ डेटा है, उस डेटा को एक्सेस करने के लिए मैं अलग अलग रोल बना दूंगा। मतलब एक स्टूडेंट है, काइंड ऑफ यूजर, आप इसको कह सकते हो यूजर। रोल बना दिया या यूजर बना दिया, एक स्टूडेंट है, एक लाइक फैकल्टी है, और एक लेट्स से डीन है। तो सबके लिए अपना अपना रोल बेस्ड, इसको हम बोलते हैं रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। और ये आज के टाइम पे बहुत ही जरूरी है। आप कोई भी साइट पे अगर आप मतलब अगर एक किसी भी वेबसाइट पे, लेट्स से कि आप इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे कोई फॉर्म भर रहे हैं SSB के लिए, तो क्या लगता है आपको कि आप कोई भी इंफॉर्मेशन वहां पे चेक कर सकते हैं? नहीं, वहां पे ऑथेंटिकेटेड बंदों के लिए अलग से, यूजर्स के लिए अलग से रोल है, और आपके लिए अलग से वहां पे रोल बना हुआ है, ताकि आप जितना डेटा वो आपको दिखाना चाहते हैं सिर्फ उतना ही डेटा आपको विजिबल होगा, बाकी का डेटा आपके लिए वो इनविजिबल है। तो इस वजह से क्या है, यहाँ पे सिक्योरिटी मिल रही है मेरे को। लेकिन फाइल सिस्टम में ऐसा कोई सीन नहीं है, बिकॉज फाइल सिस्टम को हैंडल कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम में हायरार्किकल बेस्ड, हायरार्किकल मतलब लेवल बाय लेवल,
लेवल बाय लेवल के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है आपके सिस्टम में। ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, जब आप फ्लैप ऑन करते हो वहां पे पासवर्ड आता है, आपने पासवर्ड भरा, सिस्टम ऑन, जब सिस्टम ऑन हो गया कोई भी ड्राइव में चले जाओ, सी में चले जाओ, डी में चले जाओ, मतलब वहां पे ये तो हो गया सिर्फ यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब 1000 बंदे उस डेटा को एक्सेस करेंगे तब फाइल में कोई सिक्योरिटी का प्रोटोकॉल नहीं है। लेकिन डीबीएमएस जो है वो रोल बेस्ड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। अलग अलग यूजर बना सकते हो, अलग अलग रोल बना सकते हो, जिससे क्या है कि पर्टिकुलर यूजर को सिर्फ उतना ही डेटा विजिबल होगा, बाकी का डेटा उसको लगेगा कि है ही नहीं, बट यस बाकी का डेटा अवेलेबल होगा, वो किसी और रोल में अवेलेबल होगा। सो दैट इज व्हाई सिक्योरिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और ये एस्पेक्ट जो है वो डीबीएमएस प्रोवाइड करता है, फाइल सिस्टम प्रोवाइड नहीं करता। फिफ्थ वन इज डेटा रिडंडेंसी। रिडंडेंसी मींस डुप्लीकेसी। डेटा डुप्लीकेसी मतलब मैं एक फाइल में कोई डेटा स्टोर कर रहा हूं, मैंने एक ही डेटा को 4 बार स्टोर कर दिया। लेट्स से मैं एक एक्सेल की फाइल बना रहा हूं, वहां पे स्टूडेंट है राम और उसका रोल नंबर है 1, मैंने 1 राम 1 राम 1 राम 1। यार जब स्टूडेंट ही एक है तो उसका डेटा 4 बार क्यों स्टोर कर रहे हो? लेकिन फाइल सिस्टम में ऐसा कोई सीन नहीं है। हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम ये चेक कर लेगा कि एक ही फाइल को 2 बार तो नहीं स्टोर कर रहे सेम नाम से, लेकिन अगर आप नाम चेंज कर दो तो वो भी स्टोर कर सकते हो। मतलब मल्टीपल जो फाइल्स विद डिफरेंट नेम्स आप स्टोर कर सकते हो, लेकिन कंटेंट उसमें एक ही होगा। लेकिन डीबीएमएस के अंदर देयर आर लॉट ऑफ कंस्ट्रेंट्स। यहाँ पे प्राइमरी की का कंस्ट्रेंट है, यहाँ पे फॉरेन की का कंस्ट्रेंट है जो डेटा इंटीग्रिटी में हेल्प करता है। तो ये अलग अलग कंस्ट्रेंट जो है वो इंश्योर करते हैं कि